बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 नवंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग का आज 41वां रोज़ है और IDF को, इसराइल के डिफेंस फोर्सेस को आज फाइनली हमास का हेडक्वार्टर्स मिल गया। कहाँ पर? अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर्स मिल जाने का दावा IDF की जानिब से सामने आया, लेकिन खाली पीली दावा नहीं है, बल्कि एक लंबी चौड़ी वीडियो भी IDF ने जारी की है। वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो को बगौर देखने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ऊपर भी हमास हेडक्वार्टर्स टॉप ट्रेंड बना हुआ है और सार्फिन की जानिब से इसी वीडियो पर डिस्कशंस की जा रही हैं। ना सिर्फ सार्फिन बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर इसराइल के ऑपरेशन पर बात की। चाइना के सदर शी जिनपिंग से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो गुफ्तगू की एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उससे ये ज़रूर वाज़ेह हो गया कि चाइना के सदर शी जिनपिंग और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान गजा से मुतल्लिक किस तरह की गुफ्तगू हुई है। वो अमेरिका के सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवालात किए गए। उन सवालात के जवाबात से आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाना है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और चाइना के सदर शी के दरमियान गजा से मुतल्लिक या फिर फ़लस्तीन जंग के मुस्तकबिल से मुतल्लिक किस तरह की गुफ्तगू हुई। चाइना के सदर और अमेरिका के सदर की मुलाकात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने से कबल ये वीडियो देखिए। उसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस वीडियो पर या फिर इस ऑपरेशन पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उस पर बात करेंगे। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the Shifa hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video, one shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa hospital. Inside the MRI center of the Shifa hospital. Israeli troops reached here a few hours ago and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. So we're still in the MRI center. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. Let's go see weapons and other prohibited items. As we walk through the main corridor here,
our troops did a preliminary search of the area. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. And let's go see the next part of what we have here. Another MRI machine. Another MRI machine where behind it we also found contraband similar to what you saw in the other areas. And let's go see the last thing, which is more related to intelligence, which I think we will be able to extract quite a lot of interesting intelligence from. If you can see, follow me. Up here on top of a spare part of the MRI department, we found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area, take a look at this door here. Blast-proof door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. Everything else looks like a hospital, only this part doesn't. Last part. Now we will see something that our Intel researchers are looking into. Hold on, before we go on, let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. वीडियो आपने देख ली जो कि आईडीएफ की जानिब से ये कहकर जारी की गई है कि पूरी दुनिया देख ले, वो दुनिया जो अल शिफा हॉस्पिटल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन पर बोल रही थी, अब उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम सबूत सामने ले आए हैं जिस पर हमारी मेहनत तो खैर बहुत लगी है। ये ड्रामा क्रिएट करने में इनकी मेहनत बहुत लगी है। बहरहाल इन्होंने पूरी कोशिश की है कि अल शिफा हॉस्पिटल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को जस्टिफाई किया जा सके, लेकिन अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सक रहे। इसलिए इन्होंने इस वीडियो के अंदर ये भी कहा कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये आगाज है, आगे आगे देखें कि हम कैसे कैसे ट्रॉमे क्रिएट करते हैं। मैं आपको कुछ हकाइक बता दूं। सबसे पहला तो ये कि ये वीडियो पहली नहीं है, बल्कि दूसरी वीडियो है जो आईडीएफ की जानिब से जारी की गई है। पहली वीडियो किधर गई? पहली वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी। आपने ये वीडियो सुनी होगी तो इसमें स्टार्ट में ये जो बंदा है, जो फौजी है आईडीएफ का, ये स्टार्ट में इस वीडियो को कह रहा है कि ये बगैर एडिटिंग के वीडियो है, हम वन गो में इस वीडियो के अंदर आपको सबूत दिखाएंगे। यानी कि पिछली वीडियो जो थी वो एडिटिंग के साथ थी और उसमें ड्रामा ऐसा था कि वो पकड़ा जा रहा था, तो इन्होंने ये दूसरी कोशिश की है।
اپنے آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کی، اور اس نے جو ثبوت دکھائے اس کی ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، بہرحال اس پر آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کیا اس آپریشن پر، الشفا ہاسپٹل کے خلاف اس آپریشن پر امریکہ کے صدر نے جو باتیں کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات ہوئی سین فرانسسکو۔ 6 سال کے بعد چائنا کے صدر شی جن پنگ گئے تھے، وہاں پر 1 گھنٹہ طویل یہ ملاقات ہوئی چائنا کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان۔ اس میں جو بات ہوئی ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشن کی بات ہوئی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان، اور دونوں بڑی طاقتوں نے یہ کہا کہ ہم کنفرنٹیشن کے بغیر پوری دنیا کے اندر، دنیا بہت بڑی ہے، چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہم دونوں بڑی طاقتیں آپس میں لڑے بغیر، کنفرنٹیشن کے بغیر اس دنیا کے اندر کام اور کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو سب سے زیادہ خوشی کی بات امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو لگی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب ہماری فوجوں کے درمیان بھی اور ہمارے آفیشلز کے درمیان بھی تواتر کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ اس ملاقات میں یوکرین کا معاملہ اور اس ملاقات میں تائیوان کا معاملہ اور غزہ کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو خبر باہر آئی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شی جن پنگ کو کہا کہ آپ ایران کو سمجھائیں کہ ایران اس جنگ کے اندر فیول ایڈ کرنے سے باز رہے، اس جنگ کو خطے میں پھیلانے سے ایران باز رہے، اس پر آپ اپنا اثر و رسوخ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو آپ استعمال کرتے ہوئے ایران کو سمجھائیں، باقی معاملات میں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس ملاقات کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی۔ جو پہلا سوال امریکہ کے صدر سے ہوا، غزہ ریلیٹڈ سوال کی میں بات کر رہا ہوں، پہلا سوال ہوا الشفا ہاسپٹل کے اندر آپریشن سے متعلق کہ آپ اس آپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا جو ثبوت سامنے آئے ہیں یا جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We can't let it get out of control. Here's the situation. You have a circumstance where the first war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with a large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons or guns. This is not the carpet bombing. This is a different thing. They're going through these tunnels. They're going in the hospital. And if you notice, I was mildly preoccupied today. I apologize. I didn't see everything. But what I did see, whether I haven't had it confirmed yet, I am asked my team to answer the question. But what happened is they're also bringing in incubators. We're bringing in other means to help the people in the hospital. And they've given the doctors and, I'm told, the doctors and nurses and personnel an opportunity to get out of harm's way. But one thing has been established is that Hamas does have headquarters, weapons, materiel below this hospital, and I suspect others. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی، جنہوں نے جسٹیفائی کیا الشفا کے اندر اسرائیل کے آپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ کوئی کارپٹ بامبنگ نہیں ہو رہی، یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اور کچھ اسرائیلی فوجی داخل ہوئے ہیں الشفا ہاسپٹل کے اندر۔ نہ صرف اسرائیلی فوجی بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی فوجی تو ادویات اور امداد بھی الشفا کے اندر پہنچا رہے ہیں تاکہ مریضوں کا خیال رکھا جائے۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ حماس کے خلاف یہ آپریشن ہے، اور کچھ اسپیسیفک جو جگہیں ہیں الشفا ہاسپٹل کے اندر جس کی انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس، وہاں پر یہ کاروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کارپٹ بامبنگ ہے یا پھر یہ الشفا کے خلاف آپریشن ہے، بلکہ حماس کے دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن ہے، جو کہ اسرائیل کی جانب سے ایک سائیڈ پر حماس کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اسرائیلی جو ہیں وہ مریضوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کب تک جاری رہے گا یہ تماشا، کب تک جاری رہے گی یہ بمباری، اور 11,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں اور ابھی تک آپ کو جو قیدی ہیں وہ بھی نہیں ملے، تو قیدیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں، امریکی قیدیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کریں۔ We've gotten great
cooperation from the Qataris. I've spoken with them as well a number of times. I am mildly hopeful. I'm mildly hopeful. With regard to when is this going to stop, I think it's going to stop when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things to the Israelis. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता। वही बातें अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वही बातें रिपीट की। 7 अक्टूबर का हमला, गले काट दिए, खवातीन के बच्चों के गले काट दिए, और हमास की जानिब से अभी भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हमास दोबारा 7 अक्टूबर को रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह की बातें अगर हमास के दहशतगर्दों की जानिब से की जाएंगी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हमास को किसी भी सूरत एलिमिनेट किया जाए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि जहां तक ताल्लुक है कैदियों का, तो वो मामला कतरी ऑफिशियल्स को हमने सौंप रखा है और कतर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन कॉन्फिडेंट है, पुरुमीद हैं कि कतर की सालसी में कतर अमेरिका समेत तमाम के तमाम जो कैदी हैं वो छुड़ाकर हमास की कैद से हमें लाकर दे देगा। और हमारा ऑपरेशन, अमेरिका के सदर ने कहा कि तब तक जारी रहेगा जब तक हम हमास के दहशतगर्दों का सफाया नहीं कर देते। अब यहाँ पर सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि देन व्हाट, फिर क्या होगा जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा या आप कैदी छुड़ा लेंगे, हमास के दहशतगर्दों को फॉर एग्जांपल आप मार देंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या इसराइल गजा पर कब्जा कर लेगा? क्या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं उस पर आप किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे? तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I made it clear to the Israelis that to Bibi and to his war cabinet that I think the only ultimate answer here is a two-state solution that's real. We got to get to the point where there is an ability to be able to even talk without worrying about whether or not we're just dealing with, they're dealing with Hamas that's going to engage in the same activities they did over the past, on the 7th. So it's, but I can't tell, I'm not a fortune teller, I can't tell you how long it's going to last. But I can tell you, I don't think it ultimately ends until there's a two-state solution. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल की बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर इसराइल ने गजा पर कब्जा करने का सोचा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसराइल की गजा पर कब्जा करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है तो टू स्टेट सोल्यूशन ही सोल्यूशन है मसले फ़लस्तीन का। बहुत प्यारी बात आपने, बहुत खूबसूरत बात की आपने। मुसलमानों के, पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन। इतना बड़ा ड्रामेबाज जिसने इसराइल के वज़ीर आज़म को तमाम तरह अहकामात अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से ही दिए गए हैं। ना सिर्फ अहकामात बल्कि असलहा, गोला बारूद भी। उन अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिका ने असलहा, गोला बारूद भी इसराइल को प्रोवाइड किया है। और अभी भी खड़े होकर बेशर्मों की तरह अमेरिका के सदर जो बाइडन ना सिर्फ इसराइल के ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि मरीज़ों के साथ जो कुछ किया जा रहा है गजा के अंदर, गजा के हॉस्पिटल के अंदर, अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर, तो उस ऑपरेशन को भी अमेरिका के सदर ने बहुत पोलाइटली जस्टिफाई किया। और फ्यूचर में ये कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। कौन सा टू स्टेट सोल्यूशन? अगर दहाइयाँ पीछे भी चले जाएं तो क्या वेस्ट बैंक और क्या गजा, 7 अक्टूबर से पहले भी गजा पर इसराइल का कब्ज़ा था, वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्ज़ा था, पूरे के पूरी सरजमीन फ़लस्तीन पर इसराइल काबिज़ है। और ये बराए नाम बातें जो अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन, क्या होगा टू स्टेट सोल्यूशन? कुछ भी नहीं होगा। सारे के सारे फ़लस्तीन पर इसराइल काबिज़ था, इसराइल काबिज़ है और आगे भी इसराइल ही काबिज़ रहने वाला है पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर। अगर OIC ममालिक ने ये जो बदनीयती है, ये जो ऑपरेशंस हैं, अगर मुसलमान ममालिक इन तमाम तर ऑपरेशंस के बावजूद, इन तमाम तर मज़ालिम के बावजूद, इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अगर मुसलमान ममालिक आज खामोश रहे तो एक एक करके सबका नंबर, ये जो दज्जाली ताकतें हैं, एक एक करके सबका नंबर लगाने वाली हैं ताकतें। बहरहाल ये तो वाज़े हो गया कि चाइना के सदर शी जिनपिंग की कोई ख़ास बात नहीं हुई।
गजा के मामले पर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कोई जंग बंदी पर कोई अमेरिका को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन पर बात की होगी, या फिर जो एक रिवायती तरीका है उसमें गजा के क्राइसिस पर, यूक्रेन जंग पर और पूरी दुनिया के जो मामलात हैं उन पर बात की गई होगी। चाइना के सदर शी और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान अगर चाइना के सदर शी प्रेशराइज करते अमेरिका के सदर जो बाइडन को जंग बंदी पर, तो फिर अमेरिका के सदर की जानिब से इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, तो अमेरिका के सदर की जानिब से इस तरह की बातें ना की जाती। बहरहाल चाइना से और रशिया से और नॉर्थ कोरिया से क्या उम्मीदें रखी जाएं जब अपने OIC कंट्रीज़ ही मस्जिदुल अक्सा की हुर्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंसानियत के लिए भी आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर क्या चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया से उम्मीद रखी जाए? उम्मीद है तो मुजाहिदीन से है, जो अभी भी सहूनी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं और ये मुकाबला करते रहेंगे। अगर कतर जैसे कंट्रीज़ ने कैदियों का तबादला करवाकर या फिर कैदी छुड़वाकर इन्हें मज़ीद कमज़ोर ना कर दिया। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।